अच्छा जी, इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है उससे पहले आप जस्ट रिकॉल व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, इफ वी से कार्बन डाइऑक्साइड has a molecular formula of CO2, so this tells us that in the molecule of carbon dioxide there is one carbon atom and two oxygen atoms. The molecular formula tells us the number of elements present and the exact number of atoms of each element present in a molecule. ये हमें molecular formula information देता है। तो definition of molecular formula बन जाती है, it tells the exact number of atoms of all the elements present in a molecule. This is the empirical, this is the molecular formula. जैसे for example, पेट्रोल का अगर molecular formula आपसे पूछा जाए ना, तो जैसे C8H18. This tells that in a molecular formula of petrol we have 8 carbon atoms and 18 hydrogen atoms. अच्छा, empirical formula on the other hand, what is an empirical formula? Empirical formula हमें क्या बताता है? Empirical formula tells us the simplest ratio of atoms in a molecule. Empirical formula बताता है, it tells the simplest ratio of atoms in a molecule. एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक और नाम होता है, दैट इज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्मूला। देखो क्या फर्क है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और एम्पेरिकल फॉर्मूला में। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज C8H18. So there are 8 carbon atoms and 18 hydrogen atoms in the molecular formula of petrol. केमिकल नेम इसका वैसे ऑक्टेन होता है, बट फॉर नाउ यू कैन जस्ट रिमेंबर, याद करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो दिस इज C8H18। अब इसमें 8 और 18 जो है, अगर मैं इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लूं, सिंपलेस्ट रेशियो मतलब विल डिवाइड दीज नंबर बाय द कॉमन नंबर। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 8 विल बिकम 4 एंड 18 विल बिकम 9। जैसे मैथ्स में आप सिंपल रेशियो रहते हो ना, वैसे ही लिया है 8 और 18 का रेशियो। तो इनके जो कॉमन नंबर है, जिसके नंबर जिस टेबल में ये दोनों आते हैं, दैट इज 2। तो 8 डिवाइड बाय 2 इज 4 एंड 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। तो सिंपलेस्ट रेशियो बन जाएगा 4:9, मतलब C4H9। ये जो C4H9 है, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला या सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला का कोई यूज नहीं है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल बता रहा है, तो दैट इज वेरी यूजफुल। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑन द अदर हैंड इज यू कैन से कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस, बिकॉज वो पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं दे रहा हमें। अब C4H9 एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स ही नहीं बता रहा, तो ना तो मैं मॉलिक्यूल बना सकता हूँ कि मॉलिक्यूल क्या है वो। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला? उसका क्या रीजन है? देखो, एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ने का जो रीजन है ना, असल में हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर कोई मेरे पास एक अननोन कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि भाई मुझे पता ही नहीं था पेट्रोल जब पहली बार मिला तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। आई डिडंट नो हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर इन द फॉर्मूला ऑफ पेट्रोल एंड नंबर ऑफ ईच एटम्स वो भी नहीं पता था। हम लोग करते क्या है, यूजिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स we find, first of all we find the number of elements या type of elements present in the formula of petrol। जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो उसमें 2 एलिमेंट्स मिले थे, कार्बन और एक हाइड्रोजन एलिमेंट। एक कार्बन एलिमेंट मिला था और एक हाइड्रोजन एलिमेंट मिला। फिर हमने ये थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर वी फाउंड आउट कि कार्बन जो है वो कितना है उसमें और हाइड्रोजन कितना है।
तो उनके बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो है या इनके बीच में जो परसेंटेज है कि कार्बन इतना परसेंट था और हाइड्रोजन इतना परसेंट था, परसेंटेज जब निकाली तो हमारे पास जो है ना उस परसेंटेज से या सिंपलेस्ट रेशियो से एम्पेरिकल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं पहले, और फिर उस एम्पेरिकल फॉर्मूला से वी वर्क आउट आवर वे टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो पहले अगर कोई अननोन कंपाउंड हमें मिलता है तो हम उसका डायरेक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बता सकते, क्योंकि दिखता तो नहीं है ना कि एक मॉलिक्यूल तो हमें नहीं दिखता कि उसमें कितने एटम्स हैं। तो हम थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल पाते हैं और उसके बाद देन वी कैन वर्क आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सही है, समझ आई बात? जी सर। यस सर। तो देखो बच्चे, एम्पेरिकल फॉर्मूला, in order to find the empirical formula we need to have certain experiments. However, we are not going to perform any experiment, but experiment करने के बाद the data available from the experiment will be given in the question. So first of all, you should know how to use that data to find the empirical formula. And once you learn how to find the empirical formula, then we will learn how to find the molecular formula from the empirical formula. हमें एंड पॉइंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक ही पहुंचना होता है, वही हमारे काम की चीज है। एम्पेरिकल फॉर्मूला काम की चीज नहीं है। इट इज फाउंड थ्रू एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स। और एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर्स के बाद जो डाटा गिवन होगा डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको गिवन हो जाएगा डाटा। एक्सपेरिमेंट तो नहीं करना, एक्सपेरिमेंट के बाद जो वैल्यूज आ रही है वो आपको दे देंगे क्वेश्चन में। उसको यूज करते हुए यू हैव टू फाइंड द empirical formula first we have to learn how to find the empirical formula from the information given. So have you all guys written this slide? आगे कर दूं? Oh, एक सेकंड। I'm writing 7 second. Okay, take 1 minute, write it down. Done? Sir, how do we find the simplest empirical formula? We only divide by 2 or other numbers as well? देखो, it is useless to find empirical formula from the molecular formula given. ठीक है, कोई फायदा नहीं है उसका, निकाल के कर भी क्या लोग। हाँ, but if you want to find the empirical formula from molecular formula, you just have to take the simplest ratio of the atoms present in a molecule. बट उसका भी फायदा नहीं है। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, वो तो सारी इंफॉर्मेशन बता रहा है, तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकाल के क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। Okay, sir. ठीक So, है, sir, why are we doing this? तो मैं ये बता रहा हूँ कि व्हेन वी फाइंड एन अननोन कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम उसमें सबसे पहले एलिमेंट्स निकालते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने रेशो में। रेशो निकालने से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला पता लग जाता है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जाता है। देखो ये सीक्वेंस है। लेट्स से वी डिस्कवर्ड एन अननोन कंपाउंड। जैसे जैसे ये मिलते गए, उस अननोन कंपाउंड से उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं पहले हम वो पता लगाते हैं, और वो एलिमेंट्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है वो पता लगाते हैं। ठीक है, वो जो सिंपलेस्ट रेशियो है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। सही है, लेकिन एम्पेरिकल फॉर्मूला कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है। फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला से वी फाइनली फाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वो तो मैं समझाने के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला को, इन ऑर्डर टू टेल यू द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को डिवाइड करके दिखाया है कि एम्पेरिकल फॉर्मूला बनता है। असल में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये C4H9 एम्पेरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो दिस विल बिकम द एम्पेरिकल फॉर्मूला C8H18। तो ये 2 आएगा ना, ये हमें वर्कआउट करना है एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर से। और ये जो सिंपलेस्ट रेशियो आ रहा है ये भी हम एक्सपेरिमेंट करके निकाल रहे हैं।
और फिर इससे हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्ट निकाल पा रहे हैं। क्लियर? Yes, sir. Sir, I don't understand. I think I joined a little bit late. देखो अभी we'll find the empirical, we will learn to how to find the empirical formula first. पहले वो सीखना है, तो वो सीखोगे तो खुद ही समझ आ जाएगा कि what is the difference between empirical formula and the molecular formula. Sir, I have one question. If the formula was C7H14, then what would be the empirical simplest formula? The formula, molecular formula is C7H14. So common Yes. number between 7 and 14 is 7 now. So this will Okay, so become we just find the CH2. common number. Sorry? We just find the common number and then divide them and find the Yes. simplest one. Okay. But he won't be asking you to find the empirical formula like this. In some cases, they may ask you, but this is not the thing we want to study. हमें जो पढ़ना है ना, हमें पहले empirical formula निकालना सीखना है, उससे molecular formula निकालें. सही है, चले आगे. अभी empirical formula निकालते कैसे हैं पहले वो सीखते हैं ना, खुद ही आ जाएगा बस समझ. चले आगे भाई. Yes, sir. Okay. So in this question is saying an acid was analyzed to and found to contain 2.44% hydrogen, 39.02% sulfur and 58.54% oxygen by mass. Find its simplest formula. Simplest formula मतलब empirical formula निकालने के लिए बोल रहा है. अच्छा, अब क्या स्टेप्स है empirical formula निकालने के लिए? देखो, there are 3 elements present in this formula: hydrogen, sulfur and oxygen. So first of all, you will write the symbol of hydrogen, and the percentage of hydrogen given is 2.44. Write the percentage in front of hydrogen. Percentage is 13.02. Now oxygen's percentage is 58.54. So write the symbol of an element and write the percentage given in front of it. Sir, G. I had a request. G beta bolo. Could you keep the test on Thursday, this Thursday, since you have a chemistry class? Because actually I have to go somewhere and I don't want to like do nothing. So I can do the test and then I can go. So are you all guys prepared for the test? I asked you over the weekend, you have to prepare yourself. No? So the test would be for atomic structure and chemical bonding. Yes, sir. So yeah. What Okay, about sir. rest of you? Afan, Daniel, Sir, हो सकता है. Jamal, Yes, sir. Zubair, Sunana, Samra, Musa, Michelle. Okay. अच्छा चलो. अभी ये तो करें. अच्छा, now the first step is that you have to divide these percentages by relative atomic masses. Relative atomic mass of hydrogen is given in the periodic table. It is 1. Please keep your calculators with you right now. Sulfur's relative atomic mass given in the periodic table is 32 and oxygen's relative atomic mass is 16. Divide करके write these answer to at least 3 decimal places. So 2.44 divided by 1 is 2.44. Sulfur is 39.02 divided by 32. This is 1.219. And oxygen is 58.54 divided by 16. This is 3.66.
6, 5, 6 2 3 decimal places. सर अब बस राउंडिंग ऑफ करनी है. हाँ 3 decimal place पे round off कर दो. You can take 2 decimal places as well, but it is advisable that you take to at least 3 decimal places ना. तो इतना accurate आएगा फिर आंसर, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आगे. तो सर H2SO4 कर लिया. नहीं नहीं नहीं, अभी एक और स्टेप है. सेकंड स्टेप इज अच्छा. you have to divide all these number by the smallest number. Sir, The I do not smallest- understand this. देखो अफान, just have to follow the simple method that hydrogen percentage is 2.44. So you know the symbol for hydrogen, it is H. You can check it out from the Yes. periodic table. Sulfur symbol is S. So the percentage of sulfur given is 39.02. तो symbol लिख के percentage लिख दो, 39.02 sulfur के आगे. And oxygen symbol is O. Write the percentage of oxygen in front of oxygen. Then you have to divide all these percentages by the relative atomic masses of each element. So hydrogen's relative atomic mass is 1. पता है कैसे देखते हैं periodic table में relative atomic mass? अफान? Yes, sir. Yes, तो I हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है. तो डिवाइड करके जो आंसर्स आ रहे हैं ना फ्रॉम कैलकुलेटर, जस्ट राइट दीस आंसर्स Okay, to okay. at I least 3 understand. decimal places. Now Yes. among all these 3 numbers, which is the smallest number? जो इसमें से सबसे smallest number, सबसे छोटा नंबर जो है, divide all these number by the smallest number. So the smallest number among all these 3 is 1.219. This is the second step जो आपको करना है. ये अक्सर हम लोग करना भूल जाते हैं, but make sure you do it. ठीक है. अच्छा, तो हाइड्रोजन कितना बन जाएगा, अब ये बताते जाओ वैल्यूज कैलकुलेट करके. Sir, it will be 2.00 for hydrogen. Okay. Now oxygen is 2.99 something. ठीक है. Now you have to round off the values. So hydrogen is 2.0016. So 2.0016 is nearly 2. So you can write 2 with hydrogen. Sulfur is exactly 1 and oxygen is 2.99. So you can round it off to 3. The hydrogen is 2. हाइड्रोजन के साथ 2 है, सल्फर के साथ 1 है, ऑक्सीजन के साथ 3 है. अच्छा, फॉर्मूला में हम कभी भी 1 लिखते नहीं है. अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मींस बाय डिफॉल्ट इट्स 1. तो दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला इज H2SO3. राइट? Yes, sir. लिख लिया है सबने? जी सर. No, sir, just 5 minutes, please. I'm ready. 5 minutes? Just 2 One- sir, 2 minutes, 2 okay? minutes. 2 minutes, 2 sir. minutes.
चले आगे. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Sorry. Sir, will you send the recording after the class to the group? Sir, can we do this question like ourselves? Yeah, you have to do it by yourself. Recording, yeah, I send you the recording, last class recording. Send नहीं हुई थी क्या group पे? Okay. Okay, find the simplest formula. Simplest formula again is empirical. Another name for the empirical formula of the carbon oxide. What is carbon oxide? It has two elements. Oxide is oxygen, and the other element is carbon. So write the symbol of carbon. Now he has not given percentages of carbon and oxygen. Instead, he has given masses of carbon and oxygen. So you will do the same steps. Instead of writing percentages, you will write masses. Carbon is 0.24 gram and oxygen is 0.32 gram. What is the first step? So you divide by AR. Yes, we divide whatever given in the question by their EAR, relative atomic mass. Carbon's relative atomic mass is 12. Oxygen's relative atomic mass is 16. So 0.24 divided by 12 becomes 0.02. And 0.32 divided by 16 becomes, it also becomes 0.02. What is the second step? We divide by simplest. We divide by the smallest number. Smallest number of all these two. These two are equal, so the smallest number is again 0.02. So sir, the simplest Divide formula both is in. CO. क्या कह रहे हो? The simplest formula is CO. Yes. Carbon becomes 1, oxygen becomes 1. So the empirical formula or the simplest formula is just CO. Done? Done, sir. Yes. Okay. Okay, do this question by yourself. I'm waiting.
सर मैग्नीशियम का AR क्या है? It's 24. ओके सर. क्या बना आंसर भाई? सर 1 second. The three element magnesium, Sir 2 minutes. sulfur. Yeah. Just keep doing. सर सल्फर का AR 16 है 32. and oxygen 16. Oxygen is 16. Mass of magnesium कितना given है? That is 0.6. Mass of sulfur given is 0.8. Mass of oxygen given is 1.6. But you have to divide all these masses by their atomic masses. So magnesium's atomic mass is 24, sulfur is 32, and oxygen is 16. So 0.025. This is again 0.025. This is 0.1. The smallest number among all these three is 0.025. So then divide all the numbers by the smallest number. Sir MgSO. So Mg becomes 1, Wait, no. S becomes 1, and oxygen becomes 4. The formula is Mg 1, S1, and O4. लिख लिया सबने? Yes sir, can you ये give सर मेरा भी आया. क्या हुआ? Can you give another one? बन गया ना सबका? Yes, sir. आगे बढ़े? जी सर. Yes, sir. Okay, question 12. An oxide of chlorine. So oxide of chlorine means there are two types of elements in this. One is chlorine and the other one is oxygen. अच्छा, आप इसमें परेशान नहीं होना कि हम क्लोरीन पहले लिखें या ऑक्सीजन पहले लिखें. It doesn't matter. You can write oxygen first or chlorine first. It won't make any difference. But you should be able to recognize that there are two elements, chlorine and oxygen, in this. So what is the mass of chlorine and what is the mass of oxygen given? क्लोरीन का 0.142 क्योंकि 8.366 ग्राम सैंपल में ऑक्सीजन का वो 0.24 ग्राम है, तो सल्फर का नहीं दिया हुआ, तो हमने बस ऑक्सीजन के सैंपल से माइनस करना. Okay, very good. देखो, mass of sample, complete sample जिसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों है ना, its mass is 0.366 grams. अच्छा, it found to contain 0.224 gram of oxygen. So oxygen mass is given, which is 0.224, but mass of chlorine is not given. Rather, mass of complete sample is given, जिसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन मिला के 0.366 है.
So in order to find the mass of chlorine, you have to subtract the mass of oxygen from the total mass of the sample. ऑक्सीजन निकाल दोगे इस टोटल में से तो क्लोरीन रह जाएगा ना. 0.366 is the total mass of the sample, and 0.224 gram is just the mass of oxygen in the sample. So if you minus the mass of oxygen from the sample, you will get the mass of chlorine. This is 0.366 minus 0.224. ये बात समझ आ गई सबको? जी सर. की बात है, बाकी सारा काम वही एम्पेरिकल फॉर्मूला का आगे वही करना है. डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस देन डिवाइड दिस बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. Sir. जी 4 times 10 to the power of -3 डेसिमल में क्या होता है? 4 Times 10 to the exponent minus 3. We call we read it out like this. 4 exponent minus 3 भी कहते हैं इसको. 4 into 10 to the power minus 3. It means you have to shift decimal places backwards 3 times. So this would become 0.004. अच्छा, you can Sir, also 0 check it out from the product table से भी निकाल के देख सकते हो. Okay, sir. You know how to do it. If you Sir? see your जी 0.004 is less than 0.014, right? 0.004 is less than 0.04. Yes. Okay, sir. अच्छा, अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना स्टैंडर्ड फॉर्म को, दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म. Usually calculator gives answer in the standard form. If you want to convert the standard form into decimal, so you can do it directly from the calculator. अगर कैलकुलेटर में देखो ना तो एक की होती है शिफ्ट. अच्छा, शिफ्ट की के नीचे आप नीचे 2 कीज आओ ना, तो एक लिखा हुआ होगा STO ऊपर ब्राउन कलर में, या जो बल्कि उसके बराबर में एक लिखा हुआ होगा ENG के ऊपर एक एरो बना हुआ होगा इस तरह का. मिला? जी सर, STO और ENG मिला है. जी मिला. तो शिफ्ट दबा के अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई वैल्यू आई है ना, तो शिफ्ट दबा के आप ENG दबाओ and do it again, shift and then ENG, so it will give you the decimal places. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को Sir, डेसिमल फॉर्म में ले आएगा वो. जी Sir, I got my answer. Cl1O4. तो क्या अभी चेक कर लेते हैं. अच्छा, फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड each of their masses by their relative atomic masses. The relative atomic mass of chlorine is 35.5 and that of the oxygen is 16. This is 0.142 divided by 35.5. This is 0.004 और ऑक्सीजन क्या बनेगा? 0.224 divided by 16 is 0.014. Then you have to divide each number by the smallest number. Yeah, I did this. Chlorine will become 1 and oxygen will become 0.014, 0.004. So this becomes 3.5. अच्छा, now there is a catch. आपको एक चीज सीखनी है यहाँ पे. ठीक है, देखो अगर वैल्यूज हमारे पास कुछ इस तरह से आती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट हैड बीन 3.1 तो उसको हम राउंड ऑफ करके 3 ले लेते. इफ इट was 3.2 तो उसको भी राउंड ऑफ करके हम 3 ले लेते. Sir, 5 and more than अच्छा. 5 is higher number. Yes, that's what mathematics says ना. If you have value 3.6, बल्कि if you have value 3.9 तो उसको हम राउंड ऑफ करके जो है ना 4 ले लेंगे. बट 3.8 है उसको भी राउंड ऑफ करके 4 ले लेंगे. But math says that if you have a value 3.5, you can round it off to 4, right? But here we won't round it off to 4. ठीक है, हम लोग 3.5 को 4 नहीं लिखेंगे. In fact, अगर वैल्यू 3.4 या मतलब कोई ऐसी वैल्यू जो 3.5 के करीब हो तो उसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे. लाइक मैथ्स की तरह राउंड ऑफ नहीं करेंगे. अगर कोई वैल्यू इस तरह से भी हो ना 3.499
So this is basically 3.5, near to 3.5. So we won't round it off like mathematics. इस तरह से नहीं करेंगे. क्या करेंगे जब 0.5 आ जाएगा यहाँ पे? Instead of rounding it off to 4, we will multiply it by 2 to make it a whole number. So 3.5 को जब आप multiply by 2 करोगे, so this becomes 7. सही है. अब अगर ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करा है तो क्लोरीन बोलेगा मुझे भी करो. तो आपको पे क्लोरीन को भी अगर एक को करोगे तो बाकी सबको भी करना पड़ेगा. By 2. Why did you multiply by 2? क्लोरीन को. Yes. No, sir. The Why? empirical formula would become Cl2O7. Wait, sir. Why did you क्यों multiply कर by रहे 2? हैं? Yes. देखो अब ये जो इंसाइट है ना कि why we are multiplying 3.5 by 2 because we want to make it a whole number. So there is another way to make it a whole number जो maths कहती है कि just make it 4, but it's not as simple as that कि मैं आपको easily explain कर सकूं, because 3.9 तक वैल्यू होती है ना तो that is 4. अगर मैं 3.5 को 4 लिख दूंगा ना तो वो एक बहुत बड़ा एरर होगा. मतलब मैथ्स तो कहती है वो ठीक है, वो मैथ्स का रूल है, लेकिन हम केमिस्ट्री में इसको राउंड ऑफ 3.5 को 4 नहीं लिखेंगे. अगर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 0.5 में आती है तो in order to make it a whole number, and we always have to make a whole number, we cannot write the empirical formula in the form of decimals, so we have to multiply it by a certain number that can be 2 or that can be 3. हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर होल नंबर बन जाता है तो गुड इनफ, अगर नहीं बनता तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बट 2 से मल्टीप्लाई करके यूजुअली बन जाता है. तो हम यहाँ पे मैथ वाला रूल फॉलो नहीं करेंगे, और उसकी इनसाइट जो है ना आपको अभी समझ नहीं आएंगी कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं. बट यू हैव टू लर्न द मेथड कि आपने उसको होल नंबर बनाने के लिए, अगर लेट्स से 3.5 नहीं, अगर कोई वैल्यू 1.5 आती या 2.5 आती या 0.5 होती या 3.5 या 4.5, तो हम इसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे. इंस्टेड विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 टू मेक इट अ होल नंबर. तो मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1, this is 3, and this is 5, this is 7, and so on. सही? जी सर. जी सर. आगे बढ़े. ओके सर. Yes, sir. चलो okay, do this one. Answer please. I don't know. Sir, Sir, what we- is the short form of iron? What is the short form of symbol of iron? Fe. Sir, Iron we have is Fe, oxygen is O. Sir, we have oxygen as well. Oxygen, iron, and
Yeah, oxygen, iron. Only oxygen and iron. Only, okay. Sir, is the answer Fe2O3? Yes. सर मेरा FeO2 आया. FeO2. अच्छा. Fe2O3 है इसका आंसर वैसे. आया बाकी लोगों का आंसर? सर मेरा आंसर आ रहा है FeO3. FeO3. अच्छा चलो करते हैं. Iron's mass given is 2.24 ग्राम. ऑक्सीजन का कितना मास है? 0.96. First of all, you have to divide these masses by their atomic masses. Iron का atomic mass 56 है, oxygen is 16. आयरन बन रहा है 0.04 और ऑक्सीजन बन रहा है 0.06. फिर क्या करोगे? सेकेंड स्टेप, डिवाइड बाय द स्मॉलेस्ट नंबर. 0.04 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. तो Fe बन जाएगा 1 और ऑक्सीजन बन जाएगा 1.5. अब 1.5 को मैं राउंड ऑफ नहीं करूंगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा. अब ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आयरन को भी करना पड़ेगा. This becomes Fe2 and 1.5 into 2 is 3. It becomes Fe2O3. Sir, if it's 1.4 or 1.6 for oxygen, for example, will we round it off or will we multiply it? Multiplied by 2. तो 1.1 होगा तो राउंड ऑफ कर देना, 1.9 होगा तो राउंड ऑफ कर देना. आते ही वैल्यूज ऐसी ही आती हैं, या तो 1.1 आ रही होगी या 1.9 आ रही होगी. इसको तो 1 लिख दोगे, उसको 2 लिख दोगे, या फिर 1.499 इस तरह से आएगी या 1.5 आएगी. 1.6 बहुत रेयर है कि 1.6 आए, लेकिन 1.6 तक अब रेंज याद कर लो ना. 1.4 से लेके 1.6 तक वैल्यूज होंगी, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके निकालना. लिख लिया? आगे बढ़े? Yes, sir. जी सर. अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो अभी. No, sir.
Chalo, do this one. Sir, what is the symbol of phosphorus? It's P. P. Oxygen is O. Periodic table नहीं है आपके पास? Sir, they gave the value किया of सर, oxygen. बस वो ढूंढने में मुश्किल हो रही थी. Sir, they gave the value of oxygen. How do we find the phosphorus? Yes. We have to find. You have to find the mass of phosphorus first. But Is there they have formula? given you the percentage now. So this is oxygen's percentage is 56.33. So what will be the percentage of 43.67 phosphorus? phosphorus. Total percentage 100 होता है ना. 100 में से 56.33 is oxygen. So phosphorus कितना हो जाएगा? 100 minus 43.67. 56.33. Yes, 43.67. Now proceed. क्या बना आंसर? 1 minute, sir. Okay. Sir, P2O5. Oh yes, P2O5. So the answer is P2O5. देखो फॉस्फोरस का एटॉमिक मास है 31, ऑक्सीजन का है 16. कितना आया है ये? 1.408. ऑक्सीजन is 16, तो ये आ रहा है 3.52. Then divide by the smallest number, which is 1.408. फॉस्फोरस 1 बना और ऑक्सीजन 2.5. 2.5. Now you cannot round it off to 3. You have to multiply it by 2. Phosphorus बन जाएगा 2 and oxygen is 5. This is P2O5. सही है? जी सर. ओके, इसको कॉपी कर लो और मैं आपको ये वर्कशीट भेज रहा हूँ. इस वर्कशीट में जो बाकी के एम्पेरिकल फॉर्मूला के क्वेश्चंस हैं वो कर लेना प्लीज होमवर्क में. Okay, sir. ठीक है, और जो कॉपी कर लें देन दे मे लीव. Okay, sir. Assalamu alaikum. Sir, the test is on Thursday, confirmed, right? I'll send you a message. ठीक Okay, है, sir. And sir, consider it confirmed as well. भेज okay, देता sir. हूँ message. And when we do the test, we can leave, right? We don't have to join. Yep. Okay, sir. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Sorry. Okay, Allah Hafiz.